So now here the angular momentum of the first orbit L1 is combined with the angular momentum of the second orbit L2. As a resultant, it gives you the total angular momentum L. So now here, if we look here, the if we look here, similarly, the spin of the first electron is combined with the spin of the second electron to give you the total spin S. So here, the total angular momentum L is combined with the total spin S, and this combination L and S gives you the total value J. So it means this L is simply L1 plus minus S1 plus minus L2, and this is equal to L1 plus L2 into L1 plus L2 minus 1 up to L1 minus L2. This is complete series. Similarly, for here, L1 is 1, L2 is 1. So here both are 1. Pandiograph videos बंद करो. Switch off your videos. Switch off your videos. So here L1 is 1, L2 is 1. So here if we substitute the value 1 plus 1, 1 plus 1 minus 1, 1 minus 1. So this is equal to 2, 1 and this is 0. So the Jn value is 2, 1 and 0. So we have 3 L values here. For L1 is equal to 1, L2 is equal to 1. So the total L is equal to 2, 1, 0 or 0, 1, 2. Similarly, spin S1 is combined with the spin S2 gives you the total spin which is equal to 1 by 2 plus minus 1 by 2. This gives you either 0 or 1. When we subtract, it gives you 0. When we add up, it gives you the 1. So now L has these values and S is this. So we have 3 values of L and 2 values of the spin. So now we have to combine these values to get the total J. हमें total J चाहिए, clear? So we have to look at the combination now. So here in the combination, so here in the combination N is equal to 0, 1, 2 and spin is equal to 0 and 1. So here we have different combination. L is equal to 0, spin is 0 or 1. L is equal to 1, spin is 0 or 1. So spin 0 gives you the singlet, spin 1 gives you the triplet. So first we are discussing the spin 0. So here for number 1, for S is equal to 0, L is equal to 0, 1 and 2. So this gives you the J value is equal to 0, 1 and 2. Because spin is 0, the J is equal to 0, 1, 2. Because J is equal to L plus S, so S is 0, it means J value is equal to L. Here spin is 0, this spin 0
gives you the m value which is equal to 1. Multiplicity is 1 which is equal to 2s plus 1. S is equal to 0, therefore the multiplicity is 1. This is 0, 1, 2. For this, we have a term value L, M and J. So here we have a term value L, M and J. 0 means S orbital, 1 means P orbital, 2 means D orbital. So we have 3 orbitals. L is equal to 0 S orbital, L is equal to 1 P orbital, L is equal to 2 D orbital. So here in this combination, M is equal to 1 means singlet. For S orbital, J is equal to 0. For P orbital, J is equal to 1. For D orbital, J is equal to 2. So these are the term values for this combination. These are the 3 term values for this combination. So we have another combination for S is equal to 1. Here S is equal to 1, L is equal to 0, 1 and 2. So J gives you 0 plus 1 is equal to 0. 1 plus 1, 1 minus 1, this gives you the 3 combinations 0, 1 and 2. This combination means 1 plus 1 gives you 2, 1 minus 1 gives you 0, so the combination varies from 0, 1, 2 here. The third combination is 1 plus minus 2 gives you 1, 2 and 3. The minimum value 1 minus 2 is equal to 1, 1 plus 2 is equal to 3, so the combination varies from 1 to 3. So here, what are the term values here? Again, S, P and D. When spin is 1, here spin is 1, the multiplicity is equal to 3 because it is equal to 2s plus 1. So this 2s plus 1 gives the multiplicity 3. So this we call it as all 3 terms is a triplet. So for 3, S is equal to 0, the value of J is equal to 0. For P orbital here, N is equal to 1 means this P orbital, the value of J is 0, 1, 2. For D orbital, N is equal to 2, the value of J is equal to 1, 2, 3. So it means we have these different levels. These are the term values, these are the term values. So here, for these term values, we have, for these values, we have different term values, 1s0, 1p1, 1d2, and the triplet 3s0, 3p012, 3d123. So these are the term values for the electron is in the ground state of the carbon. So among these all levels, which is the lowest level, or we call it as a ground level. Here, according to the polyaxial principle, we have only these values. The allowed values are is 1s0, 3p012 and 1d2. These are the allowed values because these are the possible. The condition obeys that the total wave function must be anti-symmetric. So these follow the relation that the total wave function is anti-symmetric
total wave function psi is the wave function of spin into wave function of space, or spin we call it as, space is we call it as a L. This total wave function must be anti-symmetric. These values 1p1, 3s0 and 3d, these gives the wave function symmetric. So therefore these levels are not possible, where 1s0, 3p0, 12 and 1d2 is possible because the total wave function of these term values is anti-symmetric. So therefore these levels are possible here. Here we may rewrite it as, so for the allowed term values, the total wave function must be anti-symmetric. One S0, 3P, 012 and 1D2 are the term values which gives the anti-symmetric wave function. So it means these are the allowed. So among these three, which one is the lowest? So there are certain rules and we call it as a Hund's rule. The Hund's rule will identify that which has the lowest value. अब यहाँ पे अगर हम ये देखें कि Hund's rule में सबसे पहला रूल क्या है कि जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है. इसका मतलब है कि 3p012 दिस मल्टीप्लिसिटी इज हाई. इसका मतलब है कि इसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी मींस एनर्जी लेवल डायग्राम में वो नीचे आएगा. So it means higher the multiplicity will have the lower energy. So its multiplicity is higher, so therefore its energy is lower. So now 3p012 has a lower energy than 1s0 or 1d2. Second rule क्या है? For the same multiplicity, for example, इसकी multiplicity 1s0 और 1d2, इन दोनों की multiplicity same है. For the same multiplicity, the higher the L value will have the lower energy. जिसकी L value higher है, ये D है, D की L क्या होती है? ज्यादा होती है, तो फिर इसकी एनर्जी कम होगी. क्लियर? इसकी एनर्जी कम होगी, फिर उसके बाद इसकी एनर्जी. अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना दूं तो क्या होगा देखिए. अब यहां से अगर आप ये देखें कि ये है मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन 2p2. इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 2p2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन p में थे. दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन. अब इसमें दो चीजें हमने देखी, एक में स्पिन अप था, एक में स्पिन, इसका स्पिन 0 है, इसका स्पिन 1 है. इसका मतलब है कि 1 कब है? जब दोनों स्पिन एक ही डायरेक्शन में है. इसका 0 कब है? जब एक का नीचे है दूसरे का ऊपर. अब यहां पे ये देखें, this gives the triplet which we call it as a 3p
0 1 एंड 2। और यहां से अगर आप ये देखें कि इसमें दो लेवल्स आ जाती हैं, एक है 1D2 और दूसरी है 1S0। दिस सिंगलेट इज 1D2 1S0। अब यहां पे ये देखें, इसके देखें तीन है, this is 3, this is called 3p0, this is called 3p1, this is 3p2। अब ये 0 नीचे आता है, उसके बाद 1, उसके बाद 2। अब मैंने कहा कि यहां पे हुंस रूल फॉलो करा है। हुंस रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या है? हायर द मल्टीप्लिसिटी विल हैव द लोअर एनर्जी। अगर ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, एनर्जी किस डायरेक्शन में है, ई, तो यहां पे इसकी एनर्जी सबसे कम किसकी है? 3p01। तो हायर द मल्टीप्लिसिटी विल हैव द लोअर एनर्जी, फर्स्ट रूल। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि फॉर द हुंस रूल number 1, higher the multiplicity will have lower energy। तो इसका मतलब है कि इसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, तो इन तीनों में ये नीचे आएगी। अब यहां पे इन दोनों की मल्टीप्लिसिटी सेम है, तो ये d वाला नीचे क्यों है, s वाला ऊपर क्यों है? तो फॉर द सेम मल्टीप्लिसिटी हायर द l वैल्यू, d की वैल्यू क्या है? 2 है, इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। सो फॉर द सेम मल्टीप्लिसिटी द हायर द l वैल्यू विल हैव द लोअर एनर्जी। सेकंड रूल क्या है? फॉर द सेम मेथड इन द फॉर द सेम मल्टीप्लिसिटी higher the L value will have the same, will have the lower energy। उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। थर्ड रूल क्या है? यहां पे अगर आप ये देखें कि इसकी मल्टीप्लिसिटी सेम है, लेकिन j वैल्यू जिसकी नीचे 0 है, 1 है, 2 है, कि 0 वाला नीचे आ रहा है, उसके बाद 1 वाला, उसके बाद 2 वाला, इस तरह क्यों नहीं आ रहा? पहले 2 वाला आए, फिर 1 वाला, फिर 0 वाला। उसमें डिपेंड करता है कि ये लेस देन हाफ फील्ड है या ग्रेटर देन हाफ फील्ड है। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहां पे 2 है, 2 का मतलब है ये लेस देन हाफ फील्ड है। This is less than half filled. For less than half filled shell, the lower the J value will have the lower energy. तो जिसकी J वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। For less than half filled, for less than half filled orbital, the lower the J value will have the lower energy। अब यहां पे ये देखें कि जिसकी J वैल्यू की एनर्जी कम होगी, अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो जिसकी कम होगी वो नीचे आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मोर देन हाफ फील्ड हो
हाफ फील्ड कितना होता है 3, अगर 4 हो इलेक्ट्रॉन तो फिर ये रिवर्स हो जाएगा, फिर 2 1 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट से, अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन की में जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4। तो अब आपके पास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2p4, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इस तरह से ही होगी कि 1 2 3, एक का स्पिन अप, दूसरा स्पिन, तीसरा स्पिन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 की होगी, कॉन्फ़िगरेशन 2 की होगी। तो P4 कॉन्फ़िगरेशन इज सेम एज P2, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी। लेकिन इसमें फर्क क्या होगा एनर्जी लेवल डायग्राम में, फर्क ये होगा कि जो 3p2 है वो नीचे आएगा और 3p0 जो है वो ऊपर जाएगा, बाकी सेम होगा। क्लियर? तो हम कहेंगे कि द ग्राउंड स्टेट टर्म वैल्यू फॉर द कार्बन इज 3p0 बट फॉर द ऑक्सीजन इज 3p2, क्योंकि वो ग्रेटर देन हाफ है। क्लियर? तो यहां से हम लिख सकते हैं द टर्म वैल्यू फॉर कार्बन is 3p0। दूसरा, अगर ऑक्सीजन की मैं बात कर देता हूं तो क्या होगा, द टर्म वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इज 3p2, बिकॉज ये 3p2 नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बिकॉज इट इज मोर देन हाफ फिल्ड। अगर उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो P4 में ये आपका केस उल्टा हो जाएगा। बाकी इसकी सारी कैलकुलेशंस जो है वो सेम है, बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ P4 इज सिमिलर एज P2, so the LS coupling is same. So here we have discussed the ground state term value of the carbon, the ground state term value of the oxygen. So this is the LS coupling of the carbon.